Student. So welcome to live session 4 of business analytics. So in previous session, we started with discussion on measures of dispersion, right? So in that we looked at what is range and what is quartile deviation and calculation part of it. And we also started with the concept of mean deviation or also is called as average deviation. So ये हमने previously discussion तो start किया था. एक बार दोबारा से रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है वो डेटा को एक पॉइंट से एक पोजीशन से इनसाइट्स देंगे, तो इसीलिए इन दोनों को पोजिशनल मेजर्स भी कहा जाता है. और ये दोनों बहुत ही सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. आपको उतना ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको नहीं बताएगा रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन यूज करते हुए. सो बिकॉज आपने कैलकुलेशन ऑब्जर्व किया है या प्रीवियस सेशन में, वहां पे आप रेंज में भी देख लो फॉर्मूला लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेता है, और हाईएस्ट लाइक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा. यहाँ पे बाकी सब डेटा पॉइंट्स कंसिडरेशन नहीं होता है रेंज में भी, और इवन क्वार्टर डिवीजन में एक पर्टिकुलर क्वार्टाइल पॉइंट को Q1 टू Q3 को इस पॉइंट्स लेते हुए हम क्वार्टाइल डिविएशन हमने फाइंड किया था. तो इसीलिए यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट्स को कंसिडरेशन नहीं होता है. तो ये चैलेंज ओवरकम करने के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखेंगे, जो कि है मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन. सो as we discuss this range and quartile deviation are consider all observations in the data sessions, so they ignore the distribution or composition. Excuse me. Am I audible now? I have changed my network. Please let me know if I'm audible or not. Yes. Continuing. So basically, this other measures will not look at the all data points. So to overcome these drawbacks, we will look at a better measure of dispersion, that is mean deviation. Mean deviation is also called as mean absolute deviation, or it is also called as uh, average deviation. All right. So the definition to define mean deviation:
It is the average of absolute deviations of the values from a measure of central tendency, or even you can take from median also. Basically, what it means is, if you put all the data points, if you put all the data in the graph, if your all data points is comes like this, if you put it in a graph, so if your mean of that particular dispersion is coming at this point, from this mean point, how is each data point located? So suppose a data point 1 is here, data point 2 is here, 3 is here. So how far this is from the mean point, you can understand using measure this mean deviation. So mean deviation provides you accurate sense of average variability or a spread of a data set. So main characteristics of mean deviation is, it is based on all observation, and in this, each data point is used in calculation, and deviation is taken from a central value. We will either use mean, or we can also use median. One central value we will identify. From that point, we will take deviations. Deviations मतलब कितने दूरी पर है हर एक data point, mean से या median से, उसको deviations कहेंगे. So absolute, and also in mean deviation, we will consider very importantly absolute values. Absolute values is to avoid the problem of negative and positive deviations. So from this point, mean point, so whatever comes on the right side, right, on the main point of the data will be positive values. So before that, whatever comes will be negative values, right? So to avoid that problem, we will take absolute values, so that this gives you clear picture of the data scatter. From this particular point, how far is the data points. So it will give you the scatteredness, how it is, where variability is from a central point. So central point can be both mean and also median. So the formula to calculate mean deviation is, so in case of ungrouped deviation, that is when you have discrete data set, we will use this particular formula, which is average deviation is equal to summation of x minus x bar divided by n, or if you're taking the central value as median, so then we will use this formula, that is a summation of x minus median divided by n. So n is the number of observations, and x is your each data point. X bar is mean and median values. So in case of you want to identify the relative measures, that is when if your data set has different types of units of measurement, then you will go for coefficient identification. That is, formula is average deviation divided by median, or average deviation divided by mean. Whichever you are considering, you have to divide it by that value. In case of group distributions, where you have frequency distribution, we will use this last formula, that is summation of f into x minus x bar divided by n. So these are the formulas to calculate the average deviation for both grouped and ungrouped data. So now let us look at the examples. So when we are solving examples, I want you also to solve. Meanwhile, you can also solve. If there is any corrections or errors, you can highlight, so that and you can also understand the calculation. So let us take first example. In first example, we are taking the data set which is ungrouped data, where we have discrete data set. So the data set is like this: 3, 5, 7, 10, and 15. So these are the each data points. So what the formula to calculate average deviation is summation of x minus x bar divided by n. So what if we want first x bar? X bar for discrete data set, what is the formula? Mean formula, that is x bar formula for to calculate for discrete data set, it will be summation of x divided by n. So first step, you will calculate mean. Summation of x is addition of all data points. That is 3 plus 5 plus 7 plus 10 plus 15.
divided by 5. So if you calculate this, solve this, you will get the mean that is equal to 8. Next step is what we want, x minus x bar summation. That means x minus x bar we have to do for each data point, and summation means we have to take sum of all those values. And please note this symbol what you have is absolute symbols. Two parallel lines, when it is indicated, it is represented for absolute values. This we will use to avoid the negative numbers. This example, absolute value of -5 is +5. Okay. Now we have to take deviations and we have to take the absolute values of them. So very first data point is 3, right? 3 minus 8, x minus x bar. 8 is our mean. 3 minus 8 will be, answer will be -5. So answer will be -5. We have to take absolute values. That will, minus will become plus. So first answer is 5. And second data point is 5. 5 minus 8. 5 minus 8 is -3. Absolute value is +3. Third data point is 7. -8. 7 minus 8 is -1. Absolute data point is +1. And 10 minus 8 is 2. And next data point is 15 minus 8. That is 7. So now this calculation is called as a deviations calculations. We have calculated all the deviations now. So once all deviations are calculated, the formula says we have to take summation of that. Summation of that means you have to add all these values. So 5 plus 3 plus 1 plus 2 plus 7, that will be your numerator, divided by n. N is the number of observations. That is, here we have total 5 data points. So divided by 5. 5 plus 3 plus 1 plus 2 plus 7 will be 18. 18 divided by 5 is 3.6. That is your mean deviation. Okay. So this is the calculation part of how to calculate mean deviation for ungrouped data. Next, let us understand the calculation of mean deviations when we have grouped data. So here we have a data set, sales of 100 companies. So this data is tabulated in group data. So this orange shade, what you are saying, only this much will be given you as the part of the problem. सिर्फ इतना मिलेगा आपको प्रॉब्लम में, सेल्स मिलेगा और नंबर ऑफ डेज जो ऑरेंज शेड में है. आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, मीन डिविएशन. सो बाकी हम लोग कैलकुलेशन एवरेज डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा. सो एवरेज डिविएशन का जो फॉर्मूला है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये है एवरेज डिविएशन इज इक्वल टू summation of x minus x bar divided by n. So note that once you look the formula, you will get it what you want. You want first x bar, then you want x minus x bar and absolute values also. And once you have got this, you want f into x minus x bar absolute values and the total of that and n. So depending on this, we will start the calculation. The very first step, first column, which you will be doing is the x column. X column is the midpoint column. So how to calculate the midpoints? To calculate midpoints, we have to add the interval divided by 2. So first x value is 45, right? So the first midpoint, that is x, that will be equal to, the class interval is 40 plus 50 divided by 2. So how much we will get here? 40, 45. So this is how we calculate this x midpoint. So we have calculated here 45. Similarly, you have to calculate for all the class intervals. So next step, we have to calculate
50 to 60 class interval, that will be 50 plus 60 divided by 2. And next step is 60 plus 70 divided by 2, that will be 65. 70 plus 80 divided by 2 is 75. 80 plus 90 divided by 2 is 85. And 90 plus 100 divided by 2 is 95. So what we have to do here, first step is to calculate the x column. To calculate x column, you have to add the intervals divided by 2. And the next step is, now you have calculated x. So your to calculate x bar, you want fx, that is f into x column. So the second step is to calculate this column, that is f into x. Because for grouped distribution, x bar formula is summation of f into x divided by n. So f into x is just multiply f into x column, that is 5 into 45 is be equal to 225. Same continue. 15 into 55 is 825. And 25 into 65 is 1625. And 30 into 75 is 2250. And 20 into 85 is 1700. And 5 into 95 is 475. So you have calculated the f into x column, and then do the totaling also. So if you total this, you will get 7100. Students, you can also calculate that to check whether the values are correct or wrong. So x bar, what will be, it will become x bar is equal to summation of f into x, we have already calculated, that will become 7100. And n is the total of f column, that is 100. This is your n. So x bar is equal to 7100 divided by 100. You will get x bar as 71. So second step, what you have to calculate f into x and then do the totaling to calculate the x bar. So you have to calculate the x bar in second step. So after calculation, we have got the x bar as 71. So let us note it down here. X bar, what we have calculated, that we have got 71. So the next step is we have to calculate the x minus x bar column. So this is the x minus x bar column, that is just deducting the mean from each of the data point x column. So here first data point is 45, right? And next is x bar, we have already calculated, that is 71. So 45 minus 71 is minus 26. Similarly, for the next data point, 55 minus 71, that will be minus 16. Similarly, continue. That is 65 minus 71. And next is 75 minus 71. And for next, 85 minus 71. And lastly, 95 minus 71. So using this, from each data point, you have deducted the x bar, which is 71. So third step, what you have to do is, you have to calculate the x minus x bar column after you have calculated. So next is what we need. Here a formula says we need absolute values. Absolute values is, we have to remove the signs. This will be your fourth column for calculation, where you will find out the absolute values. That means minus 26 will become 26. Just you have to remove the signs. And minus 16 will become plus 6.
15 and minus 6 will become plus 6. ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ, प्लस साइन को वैसे का वैसे ही रखो और माइनस साइन जो है आपको वो हटाने हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज में बदलने के लिए. सो उसके बाद आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x माइनस एक्स बार मिल जाएगा. So the next column for calculation is this fifth column, that is f into x minus x bar. So f column is given. This is the f column and you have calculated the absolute values. So you have to multiply these two columns. So 5 into 26. So 5 into 26, you will get 130, and 15 into 16, you will get 240. And similarly, continue. F is 25 into 6 is 150, and 30 into 4 is 120, and 20 into 14 is 280, and 5 into 24 is 120. So once you have calculated this column, so you have to do the totaling. If you do this totaling, you will get 1040, which is your numerator, where you have done f into x minus x bar. So 1040 numerator you have achieved it. Yeah, n is already here, that is 100. So 10.4 is your average deviation. Okay, so this is the average deviation, how you will calculate for the grouped data. So the calculation is very simple. If you know the formula, you will get to know what and all you have to calculate. So based on that, you can draw the columns. Any questions on this calculation part? I hope everyone have understood how to calculate. देवेंद्र कुमार 71 आप कौन सा बोल रहे हो आप? मुझे नहीं समझ. 71 आई कांट सी. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द मीन. ओके, 71 जो है हमने कैलकुलेशन किया है, एक्स बार है ये. सो एक्स बार है मीन. सो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स बार आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये मीन कैलकुलेशन में हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, जो कि है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन रहेगा एक्स बार का फॉर्मूला. सिग्मा एफ एक्स कॉलम आपको सेकेंड कॉलम टोटल करने से मिल जाएगा, जो है 7100. राइट. सो 7100 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में आपको 100 मिलेगा. सो 7100 डिवाइडेड बाय 100. सो ये करने से आपको मीन का जो वैल्यू है, एक्स बार जो वैल्यू है, वो ये आपको 71 यहाँ पे मिल जाएगा. ये 71 जो वैल्यू है आपको ईच पॉइंट, डेटा पॉइंट एक्स कॉलम में इससे माइनस करना है. जैसे कि फर्स्ट में 45 है, एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा आपका? 45 माइनस 71 आप करोगे तो आपको माइनस 26 मिलेगा. इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज में लोगे तो ये प्लस 26 बन जाएगा. The last column, students which who asked, this column calculation is nothing but you have already calculated this x minus x bar वाला column. यहाँ पे f already दिया हुआ है, f का column, इन दोनों को multiply करना है आपको. जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए ये क्लास लूंगी. ये इसमें f क्या है आपका? 30. तो आपको f इंटू एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट करना, वैल्यूज करना है. f is 30. 30 into this x minus x bar or absolute column, that is 30 into 4 is 120. All right. Similarly, you repeat it for all the other cases.
You can also try this chart by yourself. आप लोग भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज ट्राई कर सकते हो. आप अभी के लिए एवरेज डिविएशन आंसर 10.4 ये नोट कर लो. और ये जो ऑरेंज में है ना, ऑरेंज शेड है, ये बस आपको जब भी प्रॉब्लम आएगा एग्जाम्स में वगैरह, फाइंड द मीन डिविएशन, और इतना ही आपको डेटा मिलेगा, सेल्स और नंबर ऑफ डेज. इसका क्लास इंटरवल मिलेगा, एक आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम मिलेगा, बाकी आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मूला के बेसिस पे. तो ये आप नोट कर सकते हो, और एवरेज डिविएशन भी आप नोट कर लो आंसर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए. तो आप कैलकुलेशन खुद से भी एक बार ट्राई कर लीजिए. ओके. एंड फिक्र करने की कोई बात नहीं है. डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन में हम लोग थोड़ा और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज हमारा लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी एक तरीके का मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जिससे आपको डिस्पर्शन ऑफ वैल्यूज पता चल जाएगा. आपने मीन डिविएशन में जो देखा, आप डिविएशंस ले रहे हो और आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हो. तो स्टैंडर्ड डिविएशन में ये फर्क रहेगा कि वो एब्सोल्यूट वैल्यूज करने के बजाय आप इसको स्क्वायर ऑफ करोगे. So basically, this standard deviation will also tell you how much your data points is deviating from the mean value or average value. But in practical scenario, when you do absolute values, so it will give you some errors. So to avoid that error, standard deviation is most commonly used because it will provide you more accurate and reliable information. So especially when you have larger data points, right, larger variations, so that time standard deviation is useful. So in mean deviation, what we used to do, we used to convert it into absolute values, right? So in standard deviation, we will square these deviations so that it makes it sensitive to outliers and larger deviation. This is the formula to calculate standard deviation is this. This is the formula. Standard deviation we denote it by this symbol. This symbol is called as sigma. Standard deviation को हम लोग हमेशा सिग्मा में लिखेंगे. और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा वेरिएंस का. अगर सिग्मा स्क्वायर आप जो कैलकुलेट करोगे, इस वैल्यू को हम लोग वेरिएंस कहेंगे. वेरिएंस इज ऑल्सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन. So variance will also give you the the dispersion of your data. So standard deviation is the statistical measure that quantifies the amount of variation or a dispersion in a data set. So if your data like standard deviation is low, so if it is low, then your data points are close to mean. If it is standard deviation is low. If you have high standard deviation, that means data points are spread widely. That means there is more value, like variability. So this is the formula. Sigma is equal to square root of summation of xi minus mu whole square. Xi is your each data point. Mu is the mean. Either you can take it as x bar also. Mu, this symbol we will use it when we are doing for population, and the x bar we will use it for sample. So divided by n is the number of observation. So this is the formula. And as we discussed, variance is another related concept with standard deviation. This also gives you average of square deviations from the mean. This will indicate how spread out the data values are from the point, like mean point. So for population variance, we will use this formula, that is xi minus mu whole square divided by n. If you are having the sample variance, we will use this formula, summation of xi minus x bar whole square divided by n minus 1.
-1, we will use it for the correction purposes. This is also called as Bessel's correction. So just see, sigma we will denote it for standard deviation. If you take the square root of the variance, you will get the standard deviation. So main important points which you have to remember about standard deviation is जैसे मीन डिविएशन में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते थे, वो इसमें नहीं रहेगा. हम इसमें डिविएशंस को स्क्वायर करके उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं. और स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस करने से आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा. So the formula is like this. So two formulas again: discrete data set x minus x bar whole square divided by n under the square root, and for group distribution, square root of sigma f into x minus x bar whole square divided by n. All right. So this is the formula, and this symbol represents sigma, which is for standard deviation. Xi is your each individual data point. X bar is mean of the data points, and n is the total number of data points, and fi is the frequency of each data point. So in group data, xi will be the midpoint of each class interval. मीन डिविएशन कंपेयर करने से ये फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन वहां पे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते थे, यहाँ पे फुल वैल्यूज लेंगे. मीन डिविएशन में कोई स्क्वायर नहीं होता था, हम लोग पॉजिटिव ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यूज करके कन्वर्ट करते थे, बाकी सब सेम ही रहेगा. So steps to calculate standard deviation is, first you have to find the mean. You have to find the mean, that is average. And second step is calculate the variance, how you will get the deviations. So once you have got the deviations, next step is to square all these deviations to make them positive, and that total what you will get is called as variance. And if you take this variance square root, then you will get the standard deviation. So now let us look at the example how to calculate it. So our first problem is here. So in this problem, the question is like, calculate the standard deviation for test scores data, that is 10, 12, 10, 12, 23. Here is the data set which is given here, 23, 16, 23, 21 and 16. So ये आपको दिया गया है, कैलकुलेट, ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशंस फॉर टेस्ट स्कोर्स. सिर्फ इतना ही आपको दिया जाएगा, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेशन ईज होने के लिए मैंने ये डेटा को कॉलम्स में डाला है, आपको अंडरस्टैंडिंग के वजह से. सो ये आपका गिवन कॉलम है, ये डेटा आपको यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ये आपको दिया गया है, जो यही डेटा कॉलम में मैंने लिखा है 10, 12, 23, 23, 16, 23, 21 and 16. So this is your given data set. All right. So very first step, what you have to calculate is mean. So first step is to calculate mean. So how do you calculate mean? To calculate mean, we have to total all. This is the ungrouped data, right? So the formula for ungrouped data for calculation is, mean calculation is, x bar is equal to sum of x divided by n. So sum of x is total of x column. So sum of 44 and divided by n. N is your number of observations. So how many number of observations are here? There are total of 8 observations. So in this given data set, so divided by 8.
So 10 plus 12 plus 23 plus 16, 23, 21 and 16, you will get 144. Divided by 8 is 18, right? So this is your mean. X bar you have calculated. Second step is column number 2, जो कि है deviations calculation. X minus X bar करना है आपको. X bar आपने already किया है, जो कि है 18. आपको हर एक डेटा पॉइंट से -18 करना है. तो पहला जो हमारा डेटा पॉइंट है वो है 10, राइट? सो 10 minus 18. 10 minus 18 is -8, and 12 minus 18 is -6, and 23 minus 18 is 1. And again continue, same. 23 minus 18 is 5, and 16 minus 18 is -2, and 23 minus 18 is 5, and 21 minus 18 is 3. Again 16 minus 18 is -2. तो आपको क्या करना है, हर डेटा पॉइंट से 18 डिडक्ट करते जाना है, जो कि है 18 जो है आपका मीन है. So second step is done. We have calculated all the deviation, that is X minus X bar. So next step is to calculate the squared deviations, that is your third column, column number 3. So square of this deviation. Square of deviation is just square, do the square of the second column. That will be -8 whole square is 64, and -6 whole square is 36, and 5 square is 25, and again 5 square is 25. So -2 whole square is 4, and again 5 square is 25, 3 square is 9, and -2 whole square is 4, right? So this is your third column calculation. Very simple. X minus X bar को आपको square में बदलना है. You have to multiply it. So once you have multiplied it, your square deviation is done. And next is you have to take the sum of square deviation. So sum of square deviation is the total of third column. That will be equal to 192. So फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन. सो स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला इज summation of x minus x bar whole square divided by n. This is all under the square root. So here you have calculated the numerator, that is 192, and n is your total number of observations, that is 8. So to calculate variance, you will do square. This is the variance. We will denote it by sigma square. You will get it 192 by 8 is 24. If you take the square root of the same, you will get 4.9. So 4.9 is your standard deviation. What this means is deviating. So each data point on average is deviating about 4.9 points, right? So this is the calculation to do a standard deviation for ungrouped data. Any questions on this? How calculations पे आपको कोई doubt है? ये ungrouped data के लिए same है. आपको बस फॉर्मूला से आपको याद रखना है कि कौन कौन से कॉलम्स आपको कैलकुलेट करना है. Okay. So next, let us look at, see, 4.9 is standard deviation. So ये आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो इस अनग्रुप डेटा के लिए, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन. जो यहाँ पे लास्ट कॉलम है ना, आपने जो ये कैलकुलेट किया है, ये आपका समेशन कॉलम है. यहाँ पे आपको 192 जो मिल रहा है, ये है सम ऑफ
x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जो कि आपका न्यूमरेटर है ना, 192 डिवाइडेड बाय n इज 8। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। 192 डिवाइडेड बाय 8 आपको 24 देगा। ये इसी को हम लोग वेरिएंस भी कहेंगे। इसको आप सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हो। अगर आप 24 का स्क्वायर रूट लेते हो, आप इफ यू हैव कैलकुलेटर प्लीज कैलकुलेट इट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 24 आपको 4.9 मिल जाएगा। सो 4.9 इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका मतलब क्या है टेस्ट स्कोर्स की, इसका अंडर इंटरप्रिटेशन कैसे रहेगा? ऑन एन एवरेज फ्रॉम मीन पॉइंट, फ्रॉम मीन जो पॉइंट है वहां से हर एक डेटा पॉइंट एटलीस्ट 4.9 पॉइंट से दूरी पर है, वेरिएबिलिटी है। आई होप इट इज क्लियर। So next, let us look at how to calculate the standard deviation for group data. So here, one more example. See, you have to, what is the question? Calculate standard deviation for the given data. यहाँ पे given data आपको सिर्फ क्लास इंटरवल मिलेगा और फ्रीक्वेंसी। अगेन ये ऑरेंज शेड में जो आपको दिख रहा है, इतना ही आपको डेटा मिलेगा, बाकी सब हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो ये फॉर्मूला, ये और आपका ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला ये है, और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का फॉर्मूला जो है ये रहेगा। सो मीन क्या चाहिए? एन चाहिए। एन तो ऑलरेडी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ही आपका एन होता है हमेशा। एन इज 20। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज समेशन ऑफ एफ, राइट? सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एक्स बार। एक्स बार कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक्स की जरूरत पड़ेगी। एक्स जो है आपका मिड पॉइंट रहेगा। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है? दोनों क्लास इंटरवल को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। यहाँ पे फर्स्ट केस में 10 प्लस 20 30, 30 divided by 2, you will get it as 15. So first midpoint x is calculated will be 50. 50 divided by 2 is 25. And same 30 plus 40 divided by 2 is 30 plus 40 is 70. 70 divided by 2 is 35. So you have calculated the midpoints. So once you have got x, next is to calculate f into x. f into x आपको मीन कैलकुलेशन के लिए जरूरत है। सो f का कॉलम ऑलरेडी है जो है 4। सो 4 into 15 you will get it as 60. 4 into 15 is 60, and 6 into 25 is 150, and 10 into 35 is 350. So f into x is calculated, right? So f into x, if you do total, that will be 560, which is your numerator to calculate x bar, divided by n. So second, so after calculating midpoint, you have to calculate mean. So you have to calculate mean. The mean formula is here. So this is the mean formula. Sigma f of x is 560 divided by 20 n. So mean is 28. So once you have calculated the mean 28, you have to go on minusing from midpoint to get the x minus x bar. X minus x bar. X bar is 28. Na? So 15 minus 28 will be minus 13, and 25 minus 28 is minus 3, and 35 minus 28 is 7. X minus x bar you have calculated, that is your deviation. Third step is done here.
And now next step is we have to square the deviation. So we have to take the square of this. Minus 13 square will be 169, and minus 3 square is 9, and 7 square is 49. So square deviations will be your next column. And last, you have to get this numerator, right? That is f into x minus x bar whole square. यहाँ पे x minus x bar whole square आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसी को f से मल्टीप्लाई करना है. f का कॉलम आपका ये रहा, और x minus x bar का कॉलम ये, जो हो जाएगा 4 into 169 is 676. And next 6 into 9 is 54, and 10 into 49 is 490. And if you take this total, you will get the numerator, that is 1220. This is the numerator calculation. So ये आपको यहाँ से मिल गया. So product of square deviations is done and frequency is done. And next is sum of product of square deviations and frequencies 1, 2 to 0. And variance formula is sigma square is equal to 1220 divided by 20. That will be 61. So you have calculated this. If you take the square root of 61, you will get approximately 7.81. That is your standard deviation. So this is how we calculate for group distribution. यहाँ पे आपको कोई डाउट्स है तो पूछिए. So ग्रुप डेटा के लिए मीन कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन. ओके, दिस इज आप कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, बिल्कुल मीन डिविएशन की तरह है. आपको फॉर्मूलाज याद करने से आपको मिल जाएगा. So I hope it is clear. Next we will understand little bit about standard deviation. So हम standard deviations के properties को समझेंगे. हमेशा आपका जो standard deviation का आंसर आएगा वो हमेशा 0 से ज्यादा आएगा. स्टैंडर्ड डिविएशन का एक प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी. स्टैंडर्ड डिविएशन you will always get the value is greater than 0. That means if you get all the standard deviation as 0, that means all data points are equal. सारे डेटा जब सेम होंगे तभी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 0 मिलेगा. थोड़ा भी डिस्पर्शन है और वेरिएबिलिटी अगर डेटा पॉइंट में होगा तो वहां पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 0 से ज्यादा आएगा. So this is one of the properties. And standard deviation units will have same data, same units as the original data. So original data में आपको जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, आपने मीटर में या सेंटीमीटर में जैसे भी डेटा कलेक्ट किया है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट भी सेम ही रहेगा. सो दिस इज इजियर टू इंटरप्रिटेशन. आप इंटरप्रिटेशन और इनसाइट्स विड्रॉ करके दिस इज यूजफुल. एंड there is standard deviation is highly sensitive to extreme values or outliers. So अगर आपके डेटा में outliers है तो standard deviation पे effect आ सकता है. तो इसीलिए हम लोग standard deviation is sensitive towards outliers करेंगे. And effect on linear transformation is, so when if your data is added with some of the values, all of the data points, so that time your standard deviation will not change. तो आप हर डेटा पॉइंट को कभी अपने एक बार में कैलकुलेशन कर लिया है, आप थोड़े टाइम के बाद अगर इसी डेटा पे कुछ ऐड होता है, सारे डेटा पॉइंट्स को सपोज ऐड होता है कुछ,
तब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हर डेटा पॉइंट को एक ही कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन सेम ही रहेगा. सो like if there is an addition of constant c to each of the data point, this shift in the data does not change the standard deviation. So in case of multiplication, if your data point is multiplied by the constant c, so constant c or k, then your standard deviation will also increase by this value. So the scaling data changes standard deviation by absolute value of the scale. अगर हर डेटा पॉइंट को अगर आप एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो रहेगा ये उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी एब्सोल्यूट वैल्यू से. अगर आप हर पॉइंट पे आप -2, हर डेटा पॉइंट से -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज बाय 2. These are the some of the properties which you have to remember about standard deviation. Next measure of dispersion is coefficient of variation. So coefficient of variation जो है ये relative measure है, जहाँ पे आपके आप डेटा पॉइंट्स, डेटा ऐसे डेटा है आपके पास जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है और डिफरेंट मीन्स है, और कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट है कि एक डेटा सेट में आपने मेजरमेंट लिया है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीटर लिया है, दूसरे डेटा सेट में आपने सेंटीमीटर लिया है. उस टाइम पे आपको रिलेटिव मेजर यूज करना पड़ेगा, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. So coefficient of variation we will also call it as CV. So CV will give you relative variability, how much the standard deviation is relative to the mean. This is useful for us when we are comparing variability across data sets. When we have two different data sets with two different means and different units, that time this will be useful. The formula to calculate CV is equal to standard deviation divided by mean into 100%. So ये coefficient of variation आपको percentage में आएगा. This means higher CV means there is more variability relative to the mean. Lower CV means there is more consistency. यहाँ पे variability कम है. CV is 100% standard deviation. That means all data points are equal to the equal mean. That time you will get 100% CV. For example, आपको दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हो एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में. जैसे कि आपके पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, क्रिप्टो करेंसी, और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स. सो वहां पे आप ये दो अलग अलग डेटा सेट है, दो अलग टाइप के डेटा सेट है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट राइट यूनिट्स. So that time you can use coefficient of variance. See, here we have option A, crypto, which has ROI 25%, volatility 15%. And option B, treasury bills, we have ROI 5% and volatility 0.75%. यहाँ पे इसका CV 60% आ रहा है, यहाँ पे CV 15%. जब CV ज्यादा रहेगा इसका मतलब क्या है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है. सो व्हेन CV is lower, your variability is lesser, there will be low volatility. So this CV you can use it to assess the risk. See, from this example we can understand that 15% is less risk, right? So option B, treasury bills, has lower relative risk. Another example to identify income variability. So for example, if you take the data, the standard deviation when you collect for high income earners is 1 lakh and the mean of this earners is 6 lakh. If you calculate the coefficient of variation, it will be 16.6%.
And if you do low income earners mean, that will be 35,000 and standard deviation is 5,000. So coefficient of variance is 14.3%. So यहाँ पे आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको एक डिस्पर्शन का मेजर दे रहा है. ओके, so this is for understanding purpose that we can use coefficient of variation when we have data set with different means or different units of measurement. So basically measures of dispersion is useful to understand how your data varies from the central values. हमने रेंज क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारे ही जो है आपको डेटा आपका कैसे स्प्रेड हुआ है और वेरिएबल हुआ है ये आपको समझने के लिए यूज होगा. और it also helps you to understand the reliability and consistency in the diversity in the data set. So अगर आपका डेटा बहुत ही वेरिएशन है तो वहां पे आपका वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा. मतलब इसके बेसिस पे आप डिसीजंस जनरलाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि वेरिएबिलिटी ज्यादा है. एंड जब भी आपका वेरिएबिलिटी कम रहेगा तब आपको जनरलाइज डिसीजंस करने के लिए इजी होगा. This is very, very important. This use of measure of dispersion is to do risk assessment, quality control, and scientific precision. It will be used. So this is also helpful for decision making and also to improvise on statistical analysis. So this is the significance of dispersion in statistics. So how to represent this dispersion in statistics? So dispersion, we understood that it is the how the spread out the values in data sets are, like what is the variability. So dispersion से आपको डेटा कितना वेरिएशन हो रहा है यह तो आपको समझ में आ गया. तो ये डिस्पर्शन जो है आप स्टैटिस्टिक्स में दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक है न्यूमेरिकल मेजर्स और दूसरे है विजुअल टूल्स. सो न्यूमेरिकल मेजर से आपको इंटरप्रिटेशन कर सकते हो और विजुअल टूल से भी आप ये डिस्पर्शन को समझ सकते हो. सो न्यूमेरिकल डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अभी तक हम लोगों ने जो देखा रेंज हुआ, वेरिएंस हुआ और स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया और क्वार्टाइल्स और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. दिस विल बी, these are your numerical measures of dispersion. So you can represent your data in statistics using numerical measures of dispersion. So if you calculate range, you will get the range of a particular data set, from what values to what values your data set are. And if you calculate standard deviation, you are getting how much units is your data is from this particular point. And same for coefficient of variation, you will use it when you have data with different units of measurement. All right. So this is all we have discussed. And you can also represent your data using visuals also. Visual data visualization में आप जैसे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो आपके डेटा पॉइंट्स को, या आप किसी जिसको आपके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है और ऑडियंस है आपके पास, उनको समझने के लिए अगर जब भी आप डेटा डिस्प्ले करोगे तो वहां पे आप ये जो डेटा सेट है आपको टैबुलेशन में या तो चार्ट्स में आप यूज कर सकते हो. We will discuss from this point forward in our upcoming class as it is due for time. Any questions from today's session? आज के क्लास से कोई डाउट्स हुआ तो पूछ लीजिए. पीपीटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा, फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे. लास्ट हम लोग क्लास में जो रिवीजन करेंगे वहां पे मैं आपको फॉर्मूलाज के पीपीटी शेयर कर दूंगी. Yeah, and any questions from today's session?
Renu, I did not get your question actually. Okay. Yes, yes, you can. Yes, Renu, you can use. Okay. So I assume there are no more questions. So yes, see you all next class. Thank you very much. Thank you, everyone.